Now we learn some thing about XOR connective, and so we use the symbol this to denote XOR, and this is known as exclusive OR. So in this connective we are given two statements P and Q, and when we take the exclusive OR between these two statements, we say that exactly one must be true. So the truth table of these will be, so for both, when both are true it is false, and then exactly one is true it is true. So this will be the logic of exclusive OR. Now we see an example of exclusive OR. Either you get 50% marks or you will be failed. So अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो इसमें एग्जैक्टली एक जो है वो दुरुस्त होगी, तो दूसरी जो है वो लाजमी तौर पे क्या होगी, फॉल्स होगी। और इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो एक्सक्लूसिव OR कहलाती है, जिसमें एक काम हो तो दूसरा काम ना हो सकता हो। सो या तो आप 50% मार्क्स दें या फिर आप फेल हो जाएं। तो this is an example of exclusive OR. Now we see some examples regarding OR versus XOR. The following proposition uses the English connective OR, determining from the context whether OR is intended to be used in the inclusive or exclusive sense. So we see here Nabil has one or two brothers. So ये इस बात से जाहिर है कि या तो उसका एक भाई हो सकता है या उसके दो भाई हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये एक ही वक्त में पूरी नहीं हो सकती। So therefore OR is used here in exclusive sense. And here is another example. To register for BSc, you must have passed the qualifying exam or be listed as a math major. Presumably, if you have passed the qualifying exam and are also listed as a math major, you can still register for BCS. Therefore OR is inclusive. तो यहाँ पे अगर आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास किया हुआ है और आपने मैथ मेजर भी किया हुआ है, तो इन दोनों स्टेटमेंट के ट्रू होने से भी आपको जो है एडमिशन मिल सकता है BCS में। So this is an example of inclusive OR.